लोग जो सीखते हैं, ठीक है, वही चीज हम अपॉर्चुनिटी लेके बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं। आप मोबाइल के पीछे पड़े, हमने मोबाइल को बिजनेस बना दिया, ठीक है, हम पैसे कमा रहे हैं, तुम यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जो आप मोबाइल फोन में सारा दिन लगाते हो, उसे तो एज ए बिजनेस कैसे यूज कर सकते हो या उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो वो सोचो। अदरवाइज फोकस ऑन योर स्टडी, right? If you can learn from mobile, it is good. If you are wasting it, your time, it will not come back, right? Next, these are the different kind of structures are. कुछ लोग चाहते हैं कि घर में चार्ज हो जाए, तो घर में तो छोटे छोटे हमारे सॉकेट लगे थे, यहाँ पे लगाएंगे तो 5-15 एम्पियर के, तो वो 8-8 घंटे में बैटरी को चार्ज करता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं मेरे तो 10-15 मिनट में बैटरी चार्ज होता है, तो फास्ट चार्जर्स भी आ रहे हैं। वो बड़े बड़े चार्जर होते हैं, पूरा पावर स्टेशन टाइप में, उनसे चार्ज करते हैं, उनके स्पेशल कनेक्टर्स होते हैं, उनसे व्हीकल को चार्ज करते हैं, 15-20 मिनट में आपकी व्हीकल चार्ज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये डिफरेंट, ये थोड़ा नोट करने वाली चीज है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं फॉर द चार्जिंग। चैडिमो एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि हर कार के अंदर एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, अदरवाइज तो कोई भी व्हीकल कैसे चार्ज करोगे। तो चैडिमो व्हिच इज यूज्ड फॉर द जापानीज कंपनी, नॉर्मली जापान से आया है। फिर सीसीएस आता है, ये यूरोपियन कंट्रीज यूज करते हैं। सुपर चार्जर टेस्ला यूज करता है, ओनली टेस्ला यूज दिस, राइट। टेस्ला जो कि पायनियर है, उसने बोला कि मैं तो अपना चार्जर सिस्टम बनाऊंगा। नेक्स्ट इज जीबीवाईटी, कि चाइना ने अपना स्टैंडर्ड बनाया, इंडिया को अडॉप्ट करना था, तो इंडिया वाज कंफ्यूज, तो उसने बोला मैं सब यूज करता हूं। तो उसने सुपर चार्जर को छोड़ के सबका स्टैंडर्ड बना दिया कि जिसका जो व्हीकल आते हैं सारे चार्जिंग ये स्टैंडर्ड उसने यहाँ दे दिया। बट वी आर हेडिंग, प्रैक्टिकली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सीसीएस। In future, new development will not happen on CHAdeMO or GBYD or supercharger. It will happen on CCS. These are the different connectors. So this is the SAE guideline. You know, SAE International make lot of automotive standards which every industry follow. These are the different standards given by the SAE Internationals, and we follow those to build the charging infrastructures, charger or design. Next. We should not forget the two-wheeler also, right? अगले 3 साल में by 2020 सर, नहीं 23 तक 100% EV हो जाने वाले हैं टू व्हीलर्स। एंड EV उसमें भी सेम ही होने वाला है, मोटर होगा, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, लेस कॉम्प्लिकेटेड देन फोर व्हीलर, बट स्टिल इट रिक्वायर्ड ए डीसी-डीसी कन्वर्टर, ऑन बोर्ड चार्जर वैसे ही होगा, कुछ में होगा कुछ में नहीं भी होगा, कुछ बाहर से चार्ज कर देंगे। रीजनरेटिव टेलीमेटिक्स, सो लिथियम आयन बैटरी पैक भी होगा, उसमें स्वैपेबल बैटरी भी होता है, उसके अंदर बैटरी निकाली घर में ले आए या कहीं से बैटरी बदल ली, क्योंकि वो बैटरी छोटी सी होती है, 3-4 किलो की बैटरी होती है, निकालो और बदलो, राइट। तो उससे आपका 30-40-50 किलोमीटर आपकी व्हीकल चल पड़ेगी। So this was all about electric vehicle. Yes, you wanted to say. While we are talking about the development, why every development has put on the vehicle. If we are talking the development is put on the road. If we are talking about the charging system, if we are charging the car at home or while the stations have been made on the road, if we are invented the road, the development has put on the road. If we keeping the road as such type of road we have to make, if car was going on that road, the car is automatically charged by that road. If we are talking about the green wars, then we have to make a such type of road. The development only, as I think the development has put on the only on the road. Just we are talking about the green about greeneries. If you are making the road while we are going on the night, if we are traveling on the night, the green, if the road is blinking, it means it produces lighting, and the cars electric motors, if we are talking EV 2030, the 100% is going to be EV motors or two-wheelers. If the road is automatically charged, if any car is moving on such type of road, then it's automatically charged. That's why we are consuming the electric charger as well as, and we are also produce greenery. You want to answer? Yes, sir. I want to mention this. Yeah. Yeah. Sorry to interrupt you.
I will take 2 minutes only. First, on 29th of October, I filed a patent on a sensor that is the fuel and temperature sensor for the commercial vehicle. That is already patented. The purpose of this fuel and temperature sensor actually एक मोबाइल ऐप होगा. अभी हम लोग जो भी बात करते हैं, जैसे जीपीएस पे हम बात करते हैं, वो हम अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं. लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं, जो उसके ओनर है, वो तो खुद गाड़ी चलाने नहीं होते, तो उनको ये पता नहीं होता कि उनकी गाड़ी अभी रनिंग कंडीशन में है या स्टार्ट कंडीशन में है, गाड़ी में कितना फ्यूल है, कितना एवरेज गाड़ी दे रही है और कितना गाड़ी का टेम्परेचर है. ये आइडिया मेरे दिमाग में बहुत पहले क्यों आया था. एक बार मैं आईएसबीटी देहरादून में बस का वेट कर रहा था, बस वाला एसी चला के 1 घंटे से सो रहा था. नुकसान किसका हो रहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का. तो क्यों ना एक ऐसा सेंसर बनाया जाए जिससे ये पता चले, मेरे मोबाइल में ऐप होगा, ये पता चले कि मेरी गाड़ी अभी स्टार्ट है लेकिन स्टॉप कंडीशन में है और टेम्परेचर 22 डिग्री है, यानी कि ड्राइवर चीट कर रहा है. ठीक है. दूसरा, फ्यूल सेंसर. अभी कुछ गाड़ियों में आता है, मेरी अपनी गाड़ी में होगा, सर आपकी गाड़ी में भी होगा, उसमें आता है लीटर कितना पेट्रोल है और कितना रेंज, कितने किलोमीटर चलेगा, 170, 200, 300, वो किलोमीटर धीरे धीरे घटता रहता है. उसी के साथ ये सेंसर भी आपकी मोबाइल ऐप में आएगा. अभी तक ये मोबाइल ऐप में नहीं है. एंड दिस प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी पेटेंट ऑन 29th of October. Second, you are talking about ERS, Electric Road System. Sir, as ways and from the nomination of BPS and Dr. D.K. Chauhan, we are working in this project, and most probably the pilot project will be held in Allahabad. And we also met the ministries last October, September, October. Sir, because अभी आपको लगता है ना हम लोग बीच बीच में गायब हो जाते हैं. हाँ, मैं आज 20 दिन के बाद कैंपस आया हूँ. ठीक है. Just because of these reasons. Sways is also doing on the ERS system, and we also collaborated with the RISE Institute Sweden for the same actually. We are developing a electric road system, and they have the pilot project in Sweden only. In all entire world, only Sweden is the first country who developed the ERS, and that is only 18 kilometer I think. Total is 18 kilometer, but in a patch. For example, 5 kilometer one and some 10 kilometer around. Total is 18 kilometers. And most probably in India, we will have the first one with the BBS for the pilot project in Allahabad. So we are doing on that. I hope you got the answer, but the thing is, until there is something you can mass produce, you can commercialize, industry doesn't or government doesn't allow you to take it forward, right? So this is a good concept. This is they are demonstrating it, but once it is commercialized, definitely it will come. So technology will change the body. So there are future trends I will discuss. Electrical mobility, I hope I have covered in detail, right? Rest you have to take note and you have to learn. I can give you the glimpse and guidelines. There are future things also. I'll cover in another 5 minutes. Next. So there are future trends are coming. 5G networks are coming. So with 5G networks, there are a lot of things are coming in vehicle. And autonomous driving, people are working on vehicle electrifications. I have already discussed. Digital cockpit, which is your vehicles will be very smart enough. Artificial intelligence it is part of the autonomous vehicles, but it will take all the decisions. Next. So this is again, you use technology, mobile phone, Facebook, WhatsApp, everything. So it will be connected. Your vehicle will be connected through this, and you will see the products in future. Next. Next. So this car will come through the CAN, LAN, different technologies, satellite connected with the cloud. Keyless entering, a lot of things will come through the car. So, next. Artificial intelligence is where autonomous driving, emotional, personalization, contextualization. So, these are few more things we are working on.
and in another 3-4 years you will start seeing that's what is happening. Next. इवन पर्सनलाइज में कौन सा गाना सुनना है, व्हीकल अपनी गाड़ी का टेम्परेचर कितना रखना है, बैठते ही पता चल जाएगा आपका फेस देख के, चलिए ये बंदा बैठा है, इसको इतना टेम्परेचर चाहिए, अपने आप गाड़ी सेट कर लेगी। ठीक है, सब कंफर्ट लेवल, कौन सा गाना सुनना है, क्या सुनना है, नींद आ रही है, वो अपने आप बता देगा, गाड़ी अपने आप डिसीजन ले लेगी। नेक्स्ट, इनबिल्ट एलेक्सा अभी आ रहा है। ठीक है, ऑल कनेक्टिविटी, आपका जितना भी बाहर से ट्रैफिक है, मैंने आपको दिखाया था ना एक स्लाइड, वो सारा काम हो रहा है। आपका डेटा, आपका पूरा सॉफ्टवेयर भी OTA से हो जाएगा, मतलब अभी जैसे मोबाइल फोन आपके सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, ऐसे आपकी गाड़ी के भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे होंगे, रियल वर्ल्ड यूजेस हो रहे होंगे। इंश्योरेंस आपकी गाड़ी का वैसे ही डिसाइड होगा। ठीक है, ड्राइवर बिहेवियर पे, यार ये ड्राइवर गाड़ी कैसे चला रहा था, सोया तो नहीं था, वो सब कैमरा सब उसमें उसके बिहेवियर भी देख लेते हैं, गाड़ी चलाने, रैश ड्राइविंग तो नहीं कर रहा था, इसकी तो आदत में शामिल था, तो विल नॉट गिव इंश्योरेंस। अगली बार आपसे चार्ज ज़्यादा कर लेंगे। आज की तारीख में आपका 10,000 में इंश्योरेंस होता है आपकी गाड़ी का, वो कहेंगे यार तेरा तो 20 में होगा, तेरी ड्राइविंग स्टाइल इज नॉट ओके। नेक्स्ट, बिल्ट इन एम्बेडेड होगा सारा। ठीक है, आपका जो फिटबैंड पहनते हैं, हेल्थ का पूरा मॉनिटरिंग उसमें चल रहा होगा कि हार्ट बीट बहुत ज़्यादा है, यू आर नॉट अलाउड टू रन दी व्हीकल, गाड़ी रुक जाएगी, भैया किसी और को बुला ले, यू आर नॉट अलाउड, पी के चलाओगे नहीं चलेगी गाड़ी। स्मोकिंग, इवन ये भी चल पड़ा, तो स्मोकिंग करोगे तो भी गड़बड़ है। नेक्स्ट, एलेक्सा सर ने बोला, ठीक है, वॉइस कंट्रोल्ड एलेक्सा। चलो, और 2012 देखी होगी ना मूवी किसी ने, यस यस वर्ल्ड एंड वाले ने, वो गाड़ी ओपन करने की सोचता था, वो मोटू आगे कहता है ओपन दी स्टार्ट द इंजन, एक सीन है ना उसमें। यस यस a lot of things are happening, सब कुछ वहाँ से इवन प्लानिंग भी हो रही होगी, a lot of things, you can whatever you can think and you cannot think will happen, right? यही लोग करेंगे, यही लोग करेंगे। ये जितने नाम दिख रहे हैं ना, सब अपने अपने नाम का एक जोड़ दो, ये तुम्हारी कंपनियां हैं, right? And you are contributing. There are small companies, startup companies, they are contributing to the automotive industry. They are coming up with new features. Pick one name for your name, right? Add here. We want to see you as a startup. Everybody was talking about job, career. Our Prime Minister talk about startups and skill. You become your own entrepreneur. So work in that direction also. Right? Next. Skill. You require all these skills. कहीं दिखाई दिया कि यहाँ पे कोई ऑटोमोटिव भी चाहिए? कहीं मैंने ये बताया ऑटोमोटिव में क्या हो रहा है, ऐसे इंडिया इज टॉकिंग अबाउट ओनली ऑटोमोटिव, दे डोंट टॉक अबाउट स्किल्स, राइट? मैकेनिकल, दे टॉक अबाउट ऑटोमोटिव। सो एवरी स्किल रिक्वायर्ड, राइट और रॉन्ग? So this is all material science, even material science is also, data analysis is also required, right? When your complete data will start going into server, somebody is required to analyze it. Next. So this is all about the technology. Sir, please stay for a minute. I would like to request Mr. Dr. D.K. Chauhan sir to come up on the stage and present a memento to Mr. Sandeep Sharma sir. Hello everyone, and first of all, I would like to thanks a lot to our guests to give us a lot of knowledge, a lot of things which we didn't have,
And so this is for you students and the members of SAE, that what you can learn from our guests and the seminars held by SAE. So if more and more seminars will be held like this, you will know a lot of things. So first of all, I would like to introduce you with our SAE club, and it has now 51 members, and our faculty, our senior faculty advisor is Mahendra Dapani, and our additional faculty advisor is Mr. Vikas Shukla. And so we have the list of office bearers we have, and so SAE India, as we till now we know that what SAE India is, and this is for you that SAE India is one of the most prestigious and well-known organizations in the field of automobile and mechanical education. And SAE India is very well-known organization in this field. It is trusted think tank advising policymakers on mobility-related matters, and it is self-sustaining society with more than 10% mobility professionals as members. So basically SAE India is a very good organization for our development and development as an engineer. So basically, this is how SAE India is important to us. So what activities we have involved till now through SAE India? First of all, as I said, we created a class campaign for the students to get them knowledge about SAE India, and after that we formed the club, and the nominations of office leaders were done, and then after appointment was done, and so we designed a club logo for that, and the office letterhead and stuff like that we did it. And after that a very important thing to mention that SAE BPS City Collegiate Club is totally paperless, and maximum works of SAE BPS City is paperless. We do not use paper for anything, so it is totally paperless. That's our initiative to save our environment. And at last, few days ago, we did an industrial visit at BPC Limited. And our future activities of BBS SAE BBS club is more industry visit in different sector and participate in different events organized by SAE India, and seminar by SAE India for different purpose, and visits publish national and international research papers, and finally interaction with different industries. Okay, for this event we also invited our alumni, and here's the reply from our alumni, because he was not present right now today, so he was unable to come here. So that's the letter of appreciation and greeting for him, and he is our alumni. So that is we are very blessed to mention his reply to us for this. Okay, so this is the letterhead of BBS CET. So that is the first time we are introducing you to the letterhead of the BBS CET. So that is SAE BBS CET. So that is how the letterhead of BBS CET will look. Okay, that's the end of the presentation. Thank you. Moving forward, I will request Mr. Anup Kagal sir to come on the stage for distributing the prize to an extraordinary talent of our college, Ankit Verma, a student of Computer Science Engineering, third year, for representing our college in Enigma, Technical Works of United College of Allahabad, and also securing the first position in coding and second position in quiz.
validity is from 1st of April to 31st of March. Sir will give it to the individual members. Thank you so much. Function, and as I have promised that I'll speak a little bit of a slight small story about the entire SA journey. In the beginning, when I came in here, that engineering is entire content of all the different branches, So I'll tell you, people here were confused कि sir आपका exact domain क्या है? आप किस domain से belong करते हैं? Because computer science people thought of that I am a computer science engineer because I was telling them how to write the codes and how to write the hierarchies and what should be the flow chart and everything, what should be the process. Similarly was with the electronics, and since I was working in the electrical field, so people thought that I might be from EN and EC. Civil utna nahi kiya because civil could not understand me little bit. But mechanical was also confused that he knows a lot about mechanical engineering also. So I only said one thing, that certainly I am a good engineer. But unfortunately, in my degree, there is a word called as mechanical written, for which I am very proud about it. But yes, I am an engineer. So I contain all the possibilities and all the areas as where I can get the inputs and information. Well, expertise field is certainly a mechanical, and then in mechanical